So, hello, welcome to the hello, गुड आफ्टरनून. सो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग मस्त होंगे. सो हमने जो हमारा एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो हम सिलेबस कवर कर रहे हैं जिसमें टॉपिक, तो अभी तक हमने जो हमारा जो एनसीईआरटी क्लास 9th का जो ज्योग्राफी है उसका हमने जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया. In this physical feature of India, we have completed our first topic, that is the Himalayan mountain. In this Himalayan mountain, we have also seen that how the Himalayan mountains were formed and their different ranges, and how they helpful in the how they helpful into preventing the western central Asian cold winds to maintain the northern plain. It फेवरेबल क्लाइमेट का सूटेबल बनाते हैं. सो इन दिस वी हैव सीन दैट हिमालयन माउंटेन्स को हमने देख लिया. फिर हमने इसके जो पार्ट्स का था जो कि ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड द शिवालिक था, उसका भी हमने देख लिया. सो हमने देख लिया कि इसमें डिफरेंट जो ग्रेटर हिमालय में जो ग्रेट हिमालय है दैट इज़ द इनर हिमालय, उसमें हमने देखा कि दे आर डिफरेंट पीक. एंड यहाँ पे हमने देखा जो मोर देन 6000 मीटर जो हाइट है जो पीक की, दीज आर प्रेजेंट इन द ग्रेटर हिमालय. इन दिस वी हैव सीन द माउंट एवरेस्ट लोकेटेड इन द नेपाल. द सेकेंड हाइएस्ट इज द कंचनजंगा एंड दिस माउंटेन इज लोकेटेड इन द इंडिया. सो वी हैव आल्सो सीन द लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स यूजफुल. एंड वी हैव आल्सो सीन द नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा इंडिया है उसमें जो पूर्वांचल हिल है, पूर्वांचल हिल्स में हमने देखा कि वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हिल्स हैं लाइक दैट अरुणाचल प्रदेश में डाफला, अगोर, मिरी, मिसमी, एंड इन द मेघालयन रीजन में गारो, खासी, जैंतिया. सो मिजोरम में. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द माउंटेन्स जो प्रेजेंट है नॉर्थ ईस्टर्न पूर्वांचल रीजन में, उसको भी हमने देखा. सो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे द सेकेंड, दैट इज़ द नदर्न प्लेन. सो इसमें हम देखेंगे कि नदर्न प्लेन का, अगर हम बात करें नदर्न प्लेन, सो अगर हम नदर्न प्लेन की लोकेशन की बात करें, सो अगर हम बात करें नदर्न प्लेन की लोकेशन की, सो इसका जो है, सो if I'll draw the map of India, so this is the map of India. If I'll draw the map of India, so this is the map of India. So this is the map of India. सो दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया. इफ यू टॉक अबाउट, सो जो नदर्न प्लेन्स है, अगर हम बात करें नदर्न प्लेन्स की लोकेशन की, नदर्न प्लेन की, लेकिन नदर्न प्लेन की अगर हम लोकेशन की बात करें, सो इट इज़ लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द हिमालय. सो नदर्न प्लेन को हम, इट इज़ आल्सो नोन एज इंडो गंगेटिक प्लेन. इंडो गंगेटिक प्लेन. Why it is known as Indo-Gangetic Plain? Because this area or this plain is drained by the tributaries of Indus and Ganga river. That's why this region is also known as Northern Plain. So अगर हम लोकेशन की बात करें, so if I'll talk about the location, so this is the region of the northern plain. So this is the region of the northern plain. And this plain is mostly drained by the Gangetic river and its tributaries. So this is the northern plain. Northern plain are also known as Indo-Gangetic plain. अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, सो ये है कहाँ पे, इट इज़ लोकेटेड द, इसकी लोकेशन की हम बात करें, सो इट इज़
लोकेटेड एट द, यहाँ पे साउथ ऑफ द हिमालयाज, साउथ ऑफ द हिमालयाज एंड नॉर्थ ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉर्थ ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो अगर हम बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू है कहाँ पे, सो दिस रीजन इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, so this is the peninsular plateau region, and we have already seen that the location of the Himalayas, that location of the Himalayas, this is the location of the Himalayas. So this is the Himalayas region and this is the peninsular plateau, and between the Himalayas region and the peninsular plateau, the second feature of India, that is the Indo-Gangetic plain is present. So अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें, so अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, if I'll talk about the formation of गंगेटिक प्लेन, अगर हम फॉर्मेशन ऑफ गंगेटिक प्लेन की बात करें, सो जो ये गंगेटिक प्लेन का फॉर्मेशन है, इट इज़ द यंगेस्ट वन। अगर हम इसकी जियोलॉजिकली बात करें तो ये यंगेस्ट है, youngest in terms of as the oldest one, that is the, we know that the oldest physical feature of India, that is the peninsular plateau, and after the peninsular plateau the Himalayas formation was happened between the 65 million years to till the 30 million years ago हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ था, और उसके बाद गंगेटिक प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम बात करें गंगेटिक प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सो इट इज फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम, डिपोजिशन ऑफ एलुवियम। एलुवियम क्या होता है, इट इज द सेडिमेंट्स, and these sediments, these are brought by the river, Himalayan river and its tributaries, and when the sediments were brought by the Himalayan river and its tributaries, and these sediments deposited over this plain, and that led to the formation of the Gangetic plain. River cons, it's the Ganga, the Gangetic river, Gangetic or the Ganga river and its tributaries. Over a millions of year पीरियड ऑफ द टाइम्स में। सो हमने देख लिया कि इसका लोकेशन कहाँ पे है और इसका फॉर्मेशंस कैसे हुआ है। सो इफ विल सी दैट इन दिस, सो दैट इट इज़ द नॉर्दर्न प्लेन दैट हैज़ बीन फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम, दैट इज़ द इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र along with its tributaries. So the Ganga, Brahmaputra and Indus, the sediments brought by these three rivers and its tributaries that led to the formation of the northern plain, and it is a very alluvial soil, that was also seen the word alluvium. What does mean the alluvium, we have also seen already. So that, and अगर हम गंगेटिक प्लेन की, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, सो एज द हिमालयाज लेंथ इट इज़ आल्सो अराउंड 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ। वही अगर विथ की हम बात करें, द विथ ऑफ दिस इट इज़ रफली अराउंड 240 to 320 किलोमीटर। सो एज द लेंथ ऑफ द हिमालयाज, जो जितनी हिमालयाज की लेंथ है उतने ही लेंथ है नदर्न प्लेन्स की है, बट इट इज़ अ फर्टाइल प्लेन है, इट इज़ अ फर्टाइल प्लेन है, इट इज़ अ फर्टाइल प्लेन। फर्टाइल प्लेन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो
फाइन सेडिमेंट्स हैं जो कि रिवर ब्रॉड करती है, एंड एवरी ईयर क्या आती है एट द फ्लड्स में, फ्लड्स के टाइम पे जो रिवर है वो न्यू एलुवियम सॉइल या फिर न्यू सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है विच इज़ फिल्ड अप ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. That's why this region is a fertile plain. So here the river coming from the northern mountain are involved in the depositional work. If I'll say that suppose this is the mountainous system, suppose this is the mountainous system, and here and from here the river descends, and this is the fertile plain. So when the river this descends from the Himalayan region, so these river they brought with self the pebbles, boulders, sediments, etc. as they descends from the higher land से, so ये यहाँ पे जो big size boulders and the pebbles हैं deposited here, but जो fine sediments हैं like the silt sand they brought with the river at the fertile plain. So and that is the known as the deposition of the sediments, and this work it is known as depositional work of the river. And the one that is here is the one on मजोली. जो मजोली है, मजोली it is the, ये आसाम रीजन में है, क्योंकि आसाम रीजन में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर ये मैक्सिमम डिपॉजिट आर द सेडिमेंट्स को कैरी आउट करती है विथ हेयरसेल्फ. दैट्स वाई एवरी ईयर अगर जब फ्लड्स आती है ब्रह्मपुत्र रीजन में, तो एवरी ईयर इट ब्रॉट अप विद द न्यू सेडिमेंट्स. यहाँ पे मैक्सिमम जो फ्लड्स आती हैं इट्स बिकॉज ऑफ द silts are the sediments. ओके, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इट इज द, ये क्या करती है साइड से कटिंग करती है और द इरोजन करती है. दैट्स वाई इट फिल्ड अप विथ मोर सेडिमेंट्स. सो मजूली क्या है, मजूली इट इज़ ए लार्जेस्ट इनहेबिटेंट रिवर राइन आइलैंड. ये रिवर राइन आइलैंड क्या है, यहाँ पे एक वर्ड है, व्हाट इज़ द रिवर राइन आइलैंड. सो रिवर राइन आइलैंड क्या होती है, रिवर राइन आइलैंड की अगर हम बात करें, इट इज़ द आइलैंड मेड अप बाय द रिवर सेडिमेंट्स. इट मीन्स थ्रू द year at when the river it brought the maximum amount of the sediments and it deposited at one place, and through the millions of the year that converted into a island that is known as the riverine island. और ये मजूली जो है that is the in the ब्रह्मपुत्र रिवर में it is the world's largest है. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात करें, सो जो रिवर्स होती हैं वो एक मेन रिवर होती है, और जो अदर रिवर्स होती हैं वो क्या करती है, वो मेन रिवर्स को इधर फ्रॉम द राइट और द लेफ्ट से ज्वाइन करती हैं, और दीज आर नोन एज द ट्रिब्यूटरीज. बट अगर हम डिस्ट्रीब्यूटरीज की हम बात करें, सो डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात करें तो जब रिवर जो होती हैं एट इन द जब रिवर फ्लो होती हैं, अगर हम यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज वर्सेज डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये दो वर्ड है दैट बोथ वर्ड रिलेटेड विद द रिवर. सो ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें, जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं दीज आर द स्मॉल रिवर्स होती हैं, स्मॉल रिवर्स दैट ज्वाइन द मेन रिवर फ्रॉम राइट or left side, and these known as the left or the right side tributaries. बट अगर हम डिस्ट्रीब्यूटरीज की हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटरीज की ये क्या होती हैं, when the river reaches at its
mouth, when the river reaches its mouth, it got divided. It got divided. It got divided into number of. It got divided into number of the. When the river reaches its mouth, in number of the. It got divided into number of distributaries. क्योंकि वहाँ पे एट दैट टाइम जो वाटर की कैपेसिटी जो अगर हम बात करें यहाँ पे एट दिस टाइम जो वाटर की कैपेसिटी होती है, वाटर की कैरिंग कैपेसिटी होती है, वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द मोर सेडिमेंट्स। So if we'll see through the map, suppose this is the main river. अगर हम बात करें, suppose this is the main river. Suppose this is the main river at its flow, but it's a plain at its mouth. Due to the it's reducing the carrying capacity because of the maximum amount of the sediments, it got divided into number of arm. And it is also known as the braided channel. That is divided into the number of the braided channel. And here is the ocean. Here is the oceans, and this is the oceans. This is the oceans. So when the river it meets as the mouth, then due to the higher amount of the sediments, it's reducing the water capacity or the carrying capacity, and when the carrying capacity of the water decreases, then it divided into the number of channel, and this channel is known as the distributaries. So we have seen the distributaries also. Now if we'll see, here is the one which is the doab. If we'll talk about the doab क्या होता है? It is a plain between two river. The plain between two river, that is known as the doab. Suppose the one river is flowing here and the another river is flowing here, and in between this is the plain, and this plain is known as the doab because of its river 1 and it is the river 2, because of it's a region between the two river, and that is known as the doab region. So अगर हम इसके अगर बाय डेफिनेशन, बाय जोग्राफिकल डेफिनेशन हम देखें, अगर हम बाय जोग्राफिकल डेफिनेशन देखें प्लेन की, अगर हम देखें व्हाट इज द प्लेन, इट इज ए फ्लैट, इसका जो होता है फ्लैट फीचर्स होता है, फ्लैट और द फर्टाइल फीचर होता है। बट अगर हम इसके फिजिकल फीचर्स की बात करें, लाइक दैट बाय डेफिनेशन देयर इज नो रिलीफ फीचर इन द प्लेन, देयर इज नो रिलीफ फीचर। वाई? बिकॉज इट इज़ अ फ्लैट फर्टाइल प्लेन होता है। बट अगर हम इसको कैटेगराइजेशन हम देखें, इसको कैटेगराइजेशन जो प्लेन का है, जो इंडो गंगेटिक प्लेन का कैटेगराइजेशन किया गया है, इफ विल सी इट इज डिवाइडेड इनटू द 4. द फर्स्ट इज द तराई भाबर,
Bhabhar region, second is the Tarai region, then Bhabhar region, and then Khaddar. So there is 4 region. There is the 4, and this is a Bangar region. Bangar, it is the Bangar region. So let's see the one by one. अगर हम बात करें भाबर रीजन की, so ये रीजन क्या है? It is located at the foothills of Himalayas. Foothills of the Himalayas. यहाँ पे जो रिवर्स होती हैं, here the river they left the जो बिग साइज बोल्डर्स होते हैं, बोल्डर्स एंड पेबल्स, और जब यहाँ पे जो रिवर पेबल्स और बोल्डर्स को यहाँ पे ये लेफ्ट करती है, तो यहाँ पे जो बिग साइज ऑफ द बोल्डर्स और पेबल्स होते हैं, जब वो ऊपर आते हैं तो यहाँ पे जो रिवर होती है वो द रिवर स्टार्ट्स फ्लोइंग बिलो दीज बोल्डर्स एंड पेबल, एंड दैट्स वाई हियर द रिवर जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है. हियर डिसअपियर ऑफ द रिवर. एंड अगर इसके विड्थ की बात करें, इट इज 8 to 10 किलोमीटर इसकी विड्थ होती है एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज में. सो अगर हम देखें, सपोज दिस इज द माउंटेनियस रीजन एंड द रिवर इट स्टार्ट हियर, द रिवर यहाँ से जब रिवर ये फुटहिल से जब रिवर हाई माउंटेन लैंड से जब ये मूविंग टुवर्ड्स द प्लेन रिवर, तो दिस रिवर दे लेफ्ट दिस बोल्डर्स and the pebbles big side, and here the river it is flowing at the below of this river, and this is the Bhabhar region. You may have seen if you will visit in the Uttarakhand region, you will be noticed that there are many regions where also that the river, these are the full of the boulders, river it is full of the boulders, and you will be surprised why these boulders are present in the river. So that is the region, it is the Bhabhar region. And the second is the Tarai region. And the second is the Tarai region. Second is the Tarai region. Second is the Tarai region. तराई रीजन क्या होती है? यहाँ पे क्या है, जो रिवर्स होती हैं जब वो बिग साइज ऑफ द बोल्डर्स एंड पेबल्स को ये लेफ्ट आउट करती हैं इन द भबर रीजन में, और जब रिवर वहाँ से फ्लो होती है, सो वहाँ से द रिवर स्टार्ट फ्लोइंग एट बिलोइंग ऑफ द boulders and pebble, and at that place the river disappeared, but here the river re-emerges again. The river re-emerges, and that's why this region is a full of swampy and marshy region. And because of the water availability, this region is useful for the paddy and sugar cane cultivation. And it is here the wildlife, अगर हम बात करें wildlife like its flora and the fauna, these are also here. अगर हम बात करें इन द यूपी का जो दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क इट इज आल्सो लोकेटेड इन द तराई रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्स होती हैं, जब ये रिवर डिसअपियर होती हैं भबर रीजन में, सो दे री-इमर्ज अगेन इन द तराई रीजन में. And because of re-emergence of the river in the Tarai region, so this region it is a full of water, and that region is known as a
marshy and the swampy region, and these regions are very suitable for the cultivation of paddy and sugarcane. And for the wildlife, this region is also beneficial. The third is the Bangar region. So the Bangar region होते हैं, it is a region, it is above the floodplains, and it is the region of the largest part, that is the older alluvium, and it makes the terrace like feature. So अगर इनकी बात करें, सपोज दिस इज द रिवर्स, सपोज ये रिवर यहाँ पे फ्लो हो रही है at present time, but at somewhere at time at the flood plain the river it was flowing at this region, but now जो river है it shift its force, now the river क्या करती है, now the river it shift its course and move towards a new region, and now this region is left, but during the flood time the water it again reaches this region somewhere, not everywhere, but in the some region the river is always it reaches towards this region. And here the big size of the, here तो sediments होते हैं, sediments की अगर हम बात करें, the sediments are the कंकड़, it means big size of the also the boulders, and these are the calcareous deposit. But these are not suitable for this is not suitable for cultivation. So अगर बंगाल रीजन की बात करें, at somewhere at time जो river था it were flowing, जो river थी वहाँ पे the river were flowing at that plain, but at times this river it shifted its course from this region at newer region, and that region is left, and that region is known as the Bangar region. और यहाँ पे जो होते हैं बिग साइज ऑफ दैट कैलकेरियस डिपॉजिट पाए जाते हैं, दैट इज द कंकड़ होते हैं, विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन. सो एंड द लास्ट वन इज द दैट इज द खद्दर रीजन. अगर हम खद्दर रीजन की बात करें, दिस रीजन इट इज द here the young deposit of the rivers, here the young deposits of rivers are found. Why? Because the river it renewed every year, the river it renewed the every year, and that's why this region is a fertile plain. Why this region? Because जो river होती हैं, तो जब ये ड्यूरिंग द फ्लड टाइम में इन द मंथ एट द साउथ वेस्ट मानसून या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून के टाइम पे जब मैक्सिमम नंबर ऑफ द रेनफॉल अकर होती है, तो ये जो रिवर होती हैं ये ओवरफ्लो होती हैं, और ये सराउंडिंग रीजन में जो वाटर होती है वो पोरिंग होती है, और जो वाटर की पोरिंग होती है सराउंडिंग रीजन में, तो जो न्यू सेडिमेंट्स रिवर ब्रॉड करती है फ्रॉम द हिमालयन रीजन से इन द एट दीज सेडिमेंट्स आर it's full of the riches, full of the nutrients, and when these nutrients it reaches to the Khaddar region, that supports the good number of the cultivation of the crops. That's why it is the fertile plain. So we have seen the Indian plain, its location, how it's formed, different word, that is the difference between the tributaries and the distributaries, and we have also seen that its features like that Babar, Tarai, Khadar and the Bangar. So
we have completed the second features, that is the Indian plate. Now the third feature, that is the peninsular plateau, we'll see in the next lecture. If you'll and thank you.